हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ व्यू टू मार्केट्स। चलिए आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं और हमने कल क्या बात की थी उसके बारे में एक बारी बात करते हैं। हमने कल आई रियलाइज दैट आई डिड नॉट मेंशन वन अपॉर्चुनिटी एरिया इन द वीडियो that we had been discussing, and I had posted about that in YouTube post, and अगर मैं आपको वो पोस्ट दिखाऊं तो यहाँ पर हमने वो लेवल्स के बारे में बात की थी अराउंड 22,591 एंड 687 लेवल्स, राइट? दैट इफ this is going to be a good opportunity area for a long position on the call side, right? So if you see, and we'll talk about two, three things and also about the view. So see, when we are talking about Nifty being in that zone, which is, 7,000 or 14,000, when Nifty was at that level, right? 7,000, 14,000, 18,000, right? You would have seen that, a trend line was being respected, right? In a way, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें या कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस है, राइट? ऐसे रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो आपको सपोर्ट करता था एग्जैक्टली, राइट? अब आपको क्या दिखेगा, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट सर्टन लेवल्स, बिकॉज निफ्टी इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम डाउन फ्रॉम 26,000, अभी भी हम देखिए 23,000 पे हैं, सो द निफ्टी साइज इज इंक्रीजिंग इन अ वे, राइट? सो this is rupees and this is also rupees, so we are increasing in the size of the value of the entire, you know the index. So when that happens, अगर आप देखेंगे तो आपके जो 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 आपका एक रेंज ऑफ सपोर्ट है वो भी एक तरीके से थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, राइट? तो आप एक नैरो रेंज लगा के आप नहीं काम कर सकते हैं। यू विल हैव टू सी देयर विल बी अ गुड काइंड ऑफ अ सपोर्ट and good resistance level you'll have to find in a zone, right? And that is something you will have to define for yourself, right? आप ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे जाएगा और यहीं से आ जाएगा, राइट? अगर आपने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाई है सो यहीं से जाएगा एंड इट विल कम लाइक दैट। नो, it might come and break this level down on the downside, or it could be a way that it goes above and comes down, right? Well, of course there are Elliott Wave concepts as well and other concepts that that you have a different kind of a B structure which goes all the way above the trend line, right? So those are different structures, but I was saying in general way, राइट? तो वो आपको वो दिखेगा, राइट? तो अगर हमने यहाँ पर जो बात करी थी सुबह, राइट, कि यहाँ पर एक जो 591 और 687 के लेवल पर, इफ़ यू सी दिस कैंडल, अगर हमने इस कैंडल का लो देखें, ये ऑलमोस्ट हमारा कैंडल का लो था 719, 22719.3. So see, it's always best to divide your strategy in a high VIX scenario, right? अगर आपका high VIX आ रहा है, right? आपका VIX high है and you are expecting that the market is going to go up and the market is going up, so you will see a VIX crash, IV crash happening, right? तो वो IV crash जो होगा आपका वो आज हुआ, right? Almost we had fallen 3% down, राइट? एंड अगर आप ये लेवल्स पे देखेंगे, ये जो रेड कैंडल्स आई हैं, ये जो रिट्रेसमेंट्स आए हैं, ये छोटे-छोटे रिट्रेसमेंट, ये भी आपका जो प्रीमियम है उसको आपको जिस बाइंग प्राइस पे आपने लिया ऑन अ नॉर्मल विक्स डे ऑफ 10, राइट? अगर आपको वो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता तो आज के दिन में आपको वो नहीं होता, राइट? यू वुड हैव सीन योर ऑप्शन प्रीमियम्स गोइंग रियली बिहेविंग रियली वायलेंटली। तो अगर आप इस दिन में अगर आप एक छोटे प्लेयर हैं, राइट, विद वन लॉट साइज यूर ट्रेडिंग, राइट, सो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, right? So it's always best to divide your strategy in, or don't put your like eggs in one basket, like we know, right? तो इट्स बेस्ट टू आप 3-4 लॉट्स में उसको आप ट्रेड कीजिए। अगर आपका यहाँ पे एक लेवल पर आता है, राइट, सो यू कैन जस्ट बाय वन लॉट, राइट, एंड देन ऑन दीज रिट्रेसमेंट्स you can buy another lot if you have that this risk capacity to handle that lot size, right? So आपको जो भी होता है, किसी को 10 लॉट्स लेने हैं, किसी को 5 लॉट्स लेने हैं, किसी की स्ट्रैटेजी कुछ कहती है, किसी को छोटा कैपिटल से ग्रो करना है तो वो आउट ऑफ द मनी में ही जाएंगे, राइट? तो बहुत सारे डिफरेंट तरह की वेरिएशन है लोगों की, राइट? सम पीपल आर बाइंग इन द मनी कॉल ऑप्शंस, राइट? कई लोगों के पास बहुत ही छोटा कैपिटल है, 10,000 20,000 कैपिटल है, राइट? वो उस कैपिटल को बड़ा करते हुए देखना चाहते हैं, राइट? तो ये भी है प्लेयर्स मार्केट में, और ऐसा नहीं है ये नहीं कर पाते, ये कर पाते हैं, राइट? विद स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और दी अदर। सो जस्ट ट्राई एंड डिवाइड योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर आपका यहाँ पे अगर हमने IV आज क्रैश देखा हुआ तो आपके प्रीमियम्स बहुत इंपैक्ट हुए होंगे।
बट आई एम श्योर आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज कैप्चर की होगी मार्केट में। नाउ इफ़ यू सी द मार्केट, वी आर कीपिंग द लेवल्स एज इज़, राइट? जो हमारे लेवल्स थे यहाँ पर, right? But now I'm not looking the market will make further upside, right? I'm not saying if the market goes on the upside, अगर वो जाती भी है यहाँ पर, so I'm not going to be interested in it, right? I will avoid it, right? So just watch the market and see what is the price action it makes tomorrow. My understanding is with that. We are going to see either a gap down tomorrow, right? And we are going to be looking for three levels that we may do a retracement now, right? So one is going to be if we are coming anywhere close to this level around 700. I'll just take away this a little up. अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा ऑलमोस्ट लाइक 700, 790, 783, right? Or 700, right? 92. So one is this level, right? If the market is coming at this level, then we have a level of around 540, right? Somewhere around this level, right? And I would rather take this as a range for coming period, right? This range, right? And one is if we go all the way down to 22,300, right? So there are three different opportunities that are coming, and it all depends कि हम किस तरह का प्राइस एक्शन बनाएंगे, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ, राइट? सो वी आर एट दिस लेवल राइट नाउ, राइट? So we are almost like at 38, and we are closer to 60%, and then we are closer to 81.2% here. So those are the levels, right? I'm expecting a gap down tomorrow, right? And if we open somewhere at these levels, तो अगर हम यहाँ पे किसी लेवल पे खुलते हैं around 22,791, and at least I think we should do another up move tomorrow for around 350 points, right? और और यहाँ पर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के देखना पड़ेगा कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, right? We may either it's best to either capture some small points, right? 150, 200 points, 150, 75, right? Something like that. Either it could be that we might gap down, we might go up first, right? We might go up first, and somewhere at these levels we might consolidate, right? Something at this. If we are going to open a gap up tomorrow, we are not going to trade. Let the market go wherever it wants to go, right? If we are having a position in which we are seeing a strong drop in the Nifty, right? Some at this level, right? Then I think the best is to see the price action, and it's best to look for a small opportunity area around this, right? So that's the view, right? And do mention that what is your understanding of the market today, how well you did in the market. Please put down in the comment section, and have a good day. Thank you so much for watching.